तांको हाथ गढ़ा ए सारा संसार न पारंती जेबे करी से उद्धार। हाँ तांको हाथ गढ़ा ए सारा संसार न पारंती जेबे करी से उद्धार। एका बसी थांतु रत्न सिंहासने एका बसी थांतु रत्न सिंहासने ए जगत भासी जाऊ महान बसी जाऊ महाबाहु जगत उद्धार हेऊ महाबाहु जगत उद्धार हेऊ। श्री मंदिरे जाई श्री जगन्नाथ को मागी बिकिया बाऊ मागी बिकिया बाऊ। मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेऊ महाबाहु जगत उद्धार हेऊ महाबाहु जगत उद्धार हेऊ जगत उद्धार हेऊ जगत उद्धार हेऊ। जय जगन्नाथ। ब्यूटीफुल वेरी नाइस। गोटे अछि आगो चावट आज्ञा गोटे आज्ञा सॉरी गोटे दीटा लाइन मु एपटे सेपटे कर देथिले बोल सॉरी फॉर दैट। जय जगन्नाथ समस्त। जीवन रे जेबे मोरा आसीब संध्या जीवन रे जेबे मोर आसीब संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या जीवन रे जेबे मोर आसीब संध्या जीवन रे जेबे मोर आसीब संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या भजन संध्या दीप जलुथिब धूप जलुथिब दीप जलुथिब धूप जलुथिब फूल साजुथिब बाजा बाजुथिब सबुरी मुहरे तोर नाटिथिब जीवन रे जेबे
मोर आसीब संध्या जीवन रे जेबे मोर आसीब संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या भजन संध्या दुनिया मते लागिब मिछ सेदिन संज बेले कहिबे सबु तु एक सत कांदिबे भाव भले हो दुनिया मते लागिब मिछ सेदिन संज बेले कहिबे सबु तु एक सत कांदिबे भाव भले दीप जलुथिब धूप जलुथिब दीप जलुथिब धूप जलुथिब फूल साजुथिब बाजा बाजुथिब भावरे मो आखि पता बुझी होइब जीवन रे जेबे मोर आसीब संध्या जीवन रे जेबे मोर आसीब संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या भजन संध्या आसीबु थरे कला ठाकुर जीवन संजे मोर शुणिबु निजे भजन परे मनर कथा मोर हो आसीबु थरे कला ठाकुर जीवन संजे मोर शुणिबु निजे भजन परे मनर कथा मोर दीप जलुथिब धूप जलुथिब दीप जलुथिब धूप जलुथिब फूल साजुथिब बाजा बाजुथिब भजन सरिले मुझे हेबि नीरब जीवन रे जेबे मोर आसीब संध्या जीवन रे जेबे मोर आसीब संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या सेई संध्या हेउ तोर भजन संध्या Thank you, Nihar. जय जगन्नाथ Very beautiful bhajans, wonderful singing. You are as you are always. So thank you. Both songs are very dedicated to Lord Jagannath. So with this, we will move to our next item of the program. Now I will introduce our chief speaker, Swami Sarvapriyananda. So many of you probably know Swami Sarvapriyananda. He is the resident Swami and head of Vedanta, it's a Vedanta Society of New York. And he's a very well-known speaker of Vedanta. And his talks are very popular. It's throughout the world. And he is a sannyasi from Ramakrishna Paramahansa order, and he's part of the
and he's from Bhubaneshwar, and he has done his MBA from Javier Management from education point of view. Since childhood, he had a very religious mind, and he has a basically he has the intention to find where is God. Even I saw like his thought was like, let me be a pilot and fly to the space and see the God. That's kind of attitude he had from the childhood. So he's very dedicated to God and finding uh, where he is, kind of thing. And his focus is mostly on Advaita Vedanta and Upanishad. So today, as I said, we are very lucky to have him among us to talk few things about Bhakti Yoga and its importance in life. So with this, I hand over to Swamiji. Swamiji, namaskar. Please take over and begin your speech. Namaskar. Let me start with a peace chant. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Om, lead us from the unreal to the real, lead us from darkness unto light, lead us from death to immortality. Om, peace, peace, peace. Let me start with one invocation to Lord Jagannath. Maham bodhe stire kanakaruchire nila shikhare vasan prasadanta sahaja balabhadrena balina subhadra madhyastha sakala suraseva vasarado Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu Me. Namaste to everybody. Mo katha suna jauchi to? Badiya suna jauchi. Very good. I'm especially grateful to the Sri Jagannath Vidya Mandir and the associated organizations, their authorities, especially to Sri Bhubaneshwar Swamiji, who contacted me for this event. I was told that I have to speak in Oriya, so I chesta karibi Oriya re kahiyaku. Odisha bahare, I've been outside Odisha for several decades. Tike Oriya re confidence kam achi, tathavi mu chesta karibi. Gote adbhuta Oriya, English misheiki, Sanskrit misheiki gote adbhuta Misra bhasha re katha kahibi mu. But I think it will I think it will be understandable to one and all. Yeah, yes. How? Ajiro topic hochi the importance of Bhakti Yoga in our lives. Amar Sanatana Dharma re जीवनर उद्देश्य किंतु आनंद प्राप्ति चारिटी जो पुरुषार्थ कहा जाए धर्म अर्थ काम मोक्ष तार समस्तिकर उद्देश्य किंतु से एका उद्देश्य द गोल इज अटेनमेंट ऑफ जॉय ऑफ ब्लिस द गोल इज ओवरकमिंग सफरिंग दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति अभिका साधारण भाव रे आमे भाबो कि बहुत पैसा हेले सक्सेस हेले जीवन रे आई विल बी हैप्पी मोर कामना पूर्ति हेले आई विल बी हैप्पी तो सेतोळे धर्म आसिक हमको कोन कहे कि तमे यू परस्यू योर गोल ऑफ काम यू परस्यू योर गोल ऑफ अर्थ बट विद इन द लिमिट्स ऑफ धर्म सो धर्म अर्थ काम ये तीनटा को मिसई कि हमको एको कहा जाए प्रवृत्ति लक्षण धर्म माने वैदिक धर्म रा गोटी अंग होची इहा
कि मनुष्यर स्वाभाविक प्रवृत्ति होची टू सर्च फॉर प्लेजर, टू ट्राई टू बी रिच एंड सक्सेसफुल एंड पावरफुल इन दिस वर्ल्ड। ताकू केमते हमें अभी ताकू मार्जित करि परिबा within the limits of morality, within the limits of ethics, so that one can evolve spiritually oneself and also one will be beneficial for society. किंतु यहाँ उपरे सर्वोपरि हम सनातन धर्म होची मोक्ष मार्ग, मुक्तिर मार्ग। ए हमर धारणा माने सबु हिंदू एवं जो इंडिक रिलीजन जाको हम कहू जेमते बौद्ध धर्म, जैन, सिख, आम समस्त आमकर विश्वास होची जे एमतिया जन्म मृत्यु चक्र अच्छी। ये आमर अभिका जमतिया जन्म आम अच्छु यही भाया केते जन्म आगु जाइछि आउरी भी आसीबो पारे। ए जन्म मृत्यु चक्र रे आमे जाउछु, वी आर इवॉल्विंग स्पिरिचुअली बट टुवर्ड्स द गोल ऑफ मुक्ति और मोक्ष। आ मुक्ति या किबा से मोक्ष नुआ किछि नुआ, ए आमर जो आनंद द सर्च फॉर ब्लिस, सर्च फॉर फुलफिलमेंट ताहार एकदम पराकाष्ठा चूड़ांत। सो जो माने मुक्ति लाभ करचंती, मोक्ष लाभ करचंती, they have gone beyond sorrow, they have attained fulfillment, they have attained ananda, आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। यही वेदांतर उद्देश्य, यही सनातन धर्मर उद्देश्य। जिते आमर साधना मार्ग अच्छी सब अल्टीमेटली दिस इज द गोल, मोक्ष लाभ कि मुक्ति लाभ। आ मोक्ष लाभ मुक्ति लाभ माने आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति। बट देर आर मेनी पाथ्स टू दिस, अलग अलग उपाय रे हेई पारे। मेनली टू पाथ्स वी कैन से, गोटे होची ज्ञान मार्ग और गोटे भक्ति मार्ग। जने साधु मते कहिथिले उत्तराखंड रे हिमालय रे कि दो ही रास्ते हैं महात्मा जी, जानो या मानो। धर्म मार्ग रे विशेष कर सनातन धर्म रे हमर दुईटा टू मेन हाईवेज। गोटे होची आपण अल्टीमेट जो ट्रुथ अच्छी ताकू जानंतु, यू रियलाइज इट, यू नो इट, that realization that I am Brahman, aham brahmasmi, enta ज्ञान अर्जन करंतु। This is one way, a direct way. And there is another way also, ताकू मानी नवा। जदि मु जानी पारुनी, मु बुझी पारुनी, मु मोर रियलाइजेशन होनी, उपलब्धि होनी, then the way is श्रद्धा, विश्वास, भक्ति। जड़े परमेश्वर अछंती, प्रभु अछंती, जगतर सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता, सर्वशक्तिमान से अछंती, आउ आमको देखुचंती। एई विश्वास रे आमे we will go ahead in our spiritual life. So these are the two broad paths, गोटे ज्ञान और गोटे भक्ति। आपण याको आउरी टिके डिटेल रे गले तीन प्रकार भी भाबी पारंती। गोटे भक्ति विश्वास रे ऊपर सेटा ठिया हेची, आ गोटे जोग मार्ग भी कहि पारंती। ध्यान करिकी आमे we will attain certain mystical experiences which will show to us the truth of the spiritual path. ईश्वर अछंती, जेमतिया नरेंद्रनाथ दत्त कलकत्ता रे से विवेकानंद केमतिया हेले, से समस्त को पचारथिले, जो माने धर्म जाजक प्रचारक तांको पचारथिले, सर हैव यू सीन गॉड, आपण ईश्वर दर्शन करचंती कि ना, खाली कथा कहउचंती। अल्टीमेटली ही फाउंड रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस तांको कहले कि आई हैव सीन गॉड, मु देखिछि तांको, तमको जेमते देखिछि ताटो भी बेसी स्पष्ट देखिछि, तमे भी देखि परिबो। सो दिस इज द पाथ ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस, अलौकिक अनुभूतिर गोटे रास्ता अछि, that also one can say. And finally another path would be the path of knowledge, the realization, विचार मार्ग रे बढ़ी के हमें ए अनुभूति करिवो जे I am Brahman, अहम ब्रह्मास्मि, एमते अनुभूति हबो। अभिका आजिर प्रसंग होची भक्ति मार्ग, the way of devotion. गीता रे अर्जुन पचारुचंती श्री कृष्ण को, and we must not forget जगन्नाथ महाप्रभु आउ कि नहंती कि सेई पुरुषोत्तम, सेई श्री कृष्ण। So we are asking Sri Krishna, Jagannath Mahaprabhu, Arjuna को through रे, Arjuna is our representative, and he is asking ए जो दुईटी मेन मार्ग आपण कहिले भगवत गीता रे, that माने this question comes on the 12th chapter, या आगरु 11th chapter से ही जाइछि। प्रभु आपण दुईटी, you have told me two approaches. One is the approach of Nirguna Brahma, Satchidananda Brahma जन अछंती, ताहाटु सब किछि हेछि, that is my real nature. I have to realize that I am not the body, not the mind,
I am pure consciousness. ଯେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ଶତକରେ କହୁଛନ୍ତି मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मु नेति नेति मार्गरे कहूची कि देह मु नुह। I am not the mind, I am not the ego, I am not the intellect, I am not the smriti, the memory, like that going forward वो पंचभूतर जो निर्मित ये देह एटा भी मु नुह। then what am I am the witness consciousness चिदानंद रूप शिवोहम। एंते उपलब्धि हेई पारे। this is the विचार मार्ग। ये गोटे मार्ग कहुई। अर्जुन पुणी पचारचंती श्रीकृष्ण को जे आपण आउ गोटे मार्ग में मते कहले ईश्वर अछंती आपण ईश्वरर अवतार। श्रीकृष्ण होचंती ईश्वर अवतार। आपण को भक्ति करले ईश्वर को भक्ति करले सही ब्रह्म ज्ञान सही मुक्ति मिल पारिबो। अबिका ये दुईटी जो दी प्रकार योगी अछंती दी प्रकार मार्ग अछंती दी प्रकार मार्ग रे चलुचंती दी प्रकार योगी। ज्ञान मार्ग रे जाउचंती ज्ञान योगी भक्ति मार्ग रे जाउचंती भक्ति योगी। ए दुई मध्य रे हु इज बेटर के योग वित्तमा योग किए भल किना जानचंती कहार मार्गटा बेटर कहार प्रैक्टिस इज बेटर। ए दीटारू मते गोटे कहंतु। ए जगह रे देयर इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेशन। आपण जदि क्लासिकल अद्वैत वेदांत को जिबे से माने कहिबे कि एक्चुअली इट इज नॉट एन ऑप्शन। ज्ञान द्वारा ही मुक्ति ज्ञानात एव कैवल्यम ज्ञान द्वारा ही मुक्ति हबो। दीटा ने इट नॉट दैट देयर इज वन ऑप्शन ऑफ ज्ञान मार्ग देयर इज वन ऑप्शन ऑफ भक्ति मार्ग। से सबले चेष्टा करिवे ज्ञान मार्ग को ऊपर रखिया को। सेतमे से कहिबे जे भक्ति भल कथा भक्ति करो ईश्वर विश्वास करो बट एट दैट इज लोअर। at one point you have to graduate to the jnana marga. You have to come to the broad highway of this brahma jnana. The classical advaita vedanta kahibe kintu sether bi ami je dekhiba very if you look closely prakand vidwan sannyasi महात्मा थिले मधुसूदन सरस्वती सीए तांकर जो गीता भाष्य अछि गीता टीका अछि गुढ़ार्थ दीपिका सेथरे कहउचंती से पूर्व पक्ष गोटे प्रश्न उठैछि जे अच्छा श्रीकृष्ण कहउचंती अर्जुन पचारले कोटा बेटर श्रीकृष्ण सीधा कहिदेले भक्ति द पाथ ऑफ भक्ति इज बेटर। पाथ ऑफ भक्ति अनडाउटेडली इज बेटर इट इज इजियर। तो पूर्व पक्ष प्रश्न उठौचंती मधुसूदन सरस्वती लिखचंती कि भक्ति इज बेटर। अभी क्या देखंतु दुईटा रास्ता अछि जदि एका जगह रे पहुंचुची गोटे रास्ता टिके कठिन आ गोटे रास्ता इज इजियर बेटर। सो इट मेक्स सेंस जोटा इजी रास्ता मु नेबी जदि एका जगह रे पहुंचीबो किंतु एका जगह रे तो पहुंचुनी। आमर आमर सिद्धांत होची जे ज्ञान मार्ग रे गले अहम ब्रह्मास्मि एमता ज्ञान हबो आ मुक्ति लाभ हबो। आपण भक्ति मार्ग रे गेले भक्ति मार्ग रे गले कोन मैक्सिमम कोन हेई पारे आपण ईश्वर दर्शन हबो मृत्यु परे वैकुंठ रे जाय कि ईश्वर पाखे रहिबे। किंतु जो अल्टीमेट तत्व जोटा जे सच्चिदानंद ब्रह्म आ मु ही सही जीव ब्रह्म ऐक्य जोटा हुए महावाक्य रो विचार रे अहम ब्रह्मास्मि विचार की तत्वमसि विचार रे हुए सेटा तो हेलानी। अतएव ज्ञान मार्ग रे गोटे उच्च सुपीरियर रिजल्ट मिले भक्ति मार्ग रे इंफीरियर लोअर रिजल्ट मिलची। जोटा सुपीरियर रिजल्ट मिलची ता पई टिके अधिक परिश्रम करले भी क्षति नहीं। एका रिजल्ट मिलिबो कम परिश्रम रे मिलिबो दैट इज गुड। बट जदि गोटे सुपीरियर रिजल्ट मिलची पूर्व पक्ष कहूची सुपीरियर रिजल्ट मिलची then one should put forth the extra effort also and take that path of jnana. सेठरे मधुसूदन सरस्वती हमको मन रखिया पड़िबो मधुसूदन सरस्वती किंतु he was a great advaitin प्रकांड अद्वैती थिले से अद्वैत सिद्धि लिखचंती। सी कहउचंती कि ना तमे भक्ति मार्ग रे गले भी तमे ईश्वर दर्शन हबो मृत्यु परे जाय कि ब्रह्म लोक रे कि वैकुंठ सेठ जाय कि रहिबो नो डाउट अबाउट इट। But further, by the grace of God, by your practice of bhakti, your mind has been so purified by the grace of God. सही महावाक्य रो सही तत्वमसि जो इंस्ट्रक्शन तमे पढ़ी छ तमे साधना करि छ तमे भाबी छै नै कि सही महावाक्य रो जनित ज्ञान भी हे जिवो by the grace of God। एठी ए जीवन रे हे जिवो नहले जाय कि वैकुंठ रे हे जिवो। अतएव तुम ब्रह्म ज्ञान रो जो रिजल्ट
अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान सेटा भी तुम्हें मिलियो थ्रू भक्ति. थ्रू भक्ति यू विल गेट ईश्वर, नो डाउट. तुम्हें वैकुंठ वास भी हबो, मुक्ति लाभ भी हबो, आ ब्रह्म ज्ञान भी हेई जिवो. So all the results which you are looking for, they can be attained through the path of bhakti. Madhusudan Saraswati कहउछंती, so who was one of the greatest Advaitins, the writer of the most recondite, difficult texts on Advaita Vedanta, like Advaita Siddhi. This is the background. अर्जुन जो पचारे जे दुईटी रास्ता अच्छी या भितर कोटा भल मत गोटे कह दिंतु. श्री कृष्ण विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, ही सेड द पाथ ऑफ भक्ति इज बेटर. अच्छा, आपण मानकटू भितर जो माने whoever feels comfortable, 1 or 2 persons can keep the video on. मते हुए कि when I am teaching something, it's good to see, it's good to see 1 or 2 faces. समझते को open करिया पड़ियोनी. Whoever is comfortable, you can switch on your video. So if you can see 1 or 2 faces, it's easier for me to communicate. So Sri Krishna कहउचंती that the path of bhakti is better. काहे की better? It is easier. He will say that in this 12th chapter of the Bhagavad Gita, which is called Bhakti Yoga. So not only Sri Krishna, ये आम सनातन धर्म रे गोटे सिद्धांत जे दुईटा मार्ग अच्छी, there are 2 paths, but Bhakti Yoga is the easier path for most people. श्री रामकृष्ण परमहंस सी भी कहते कि कड़ी जुग रे भक्ति मार्ग, कड़ी जुग रे so the easiest is the way of bhakti. आउ एथरे किछि अल्प रिजल्ट मिलियो कि some lower result मिलियो एमते न, you will get the highest result also much more easily with much greater joy. So Sri Krishna कौन कहउछन्ती सेटा आज टिके देखिबा. I will talk about it for a while and then we will go on to तापर क्वेश्चन आंसर हेई पारे, डिस्कशन हेई पारे. This is from 12th chapter of Bhagavad Gita. Shri Bhagavan uvacha mayyaveshya mano ye mam nitya yukta upasate shraddhaya parayopeta te me yukta tamamataha. Sri Krishna कहले, I am giving you a mora matta. This is my opinion. And whenever Sri Krishna in the Gita, he rarely uses this word. Matam mama, mora nija matamu kahuchi, my opinion. There we should pay attention. He is very humble. Sri Krishna is very humble. Most of the time he is teaching from the Upanishads, but in some crucial places, Sri Krishna nije kahuchanti, I am giving you my opinion. So Krishna nije kahuchanti, I am giving you my opinion. We should listen with more attention. So this is Krishna is saying here. He is making an intervention. Shastra jaha kahiva kahu. I am going to talk about all of that. But my opinion, if you want to listen to me, my advice is this. What is my advice? Krishnankar advice. Swayam Sri Jagannath Mahaprabhunkar advice eta. That the path of bhakti is better. परे कहिबे जे ज्ञान मार्ग रे जो मन जाउछंती सेमाने भी मते प्राप्त हेबे. They will also realize the truth. They will also get moksha. सबु तमके एका जिंस मिलिबो. But the approach of bhakti is easier, sweeter, better. काहे की से कहउछंती मई भक्ति को बहुत सुंदर गोटिए श्लोक रे कहि दैछंती, मय्यावेश्य मनो ये माम. जो माने भक्त किए तांकर आवेश हेछि. आवेश माने कोन केनते ताको बुझेबा. जेमते गोटे लौकिक दृष्टांत दउछि मु. साधारण भाबे मनुष्य रागी गले कि मकल तार लोभ हेले जेमते पूरा the whole mind is taken over by the strong passion. बहुत राग लागुची मते कि बहुत कोई जिंस I have a great greed for something, I really want it. See, as if the whole mind has been taken over. हमर गाँ रे एस जगह रे अछि से माने जेमते भूत ghost has possessed you. ताकू कोंती आवेश. तो मय्यावेश्य जे ईश्वर आवेश जार हेछि माने ईश्वर छड़ा आउ किछि भल लागेनी ताको. श्री रामकृष्ण कहउछले दक्षिणेश्वर थिले से मां कालीकर भक्त. से कहउछले कि से सबले कहबे कि ईश्वर बई आनी आर किछु जानी ना.
मु ईश्वर छड़ा आ किछि जानिनी मायरी कहूची मो माँ का ना नहीं कहूची मु ईश्वर छड़ा किछि जानिनी मु ताकू कहती आवेश एमतिया साधारण भावे मु केतले टिके भजन करली केतले थरे मंदिर गली एवरीबॉडी डज दैट डज नॉट मीन वी आर भक्तस भक्त मीन्स दिस वन पॉइंटेड प्रभु होचंती मोर सर्वस्व हनुमान ताको पचार है तुम जान तो रामचंद्र तुम रामचंद्र भक्त किंतु यू नो दैट रामचंद्र स्वयं होचंती विष्णु आउ से स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हनुमान को रिप्लाई इज वेरी इंटरेस्टिंग हनुमान कहते श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व श्रीराम कमल लोचन मु जानी जे जानकीनाथ माने रामचंद्र आ श्रीनाथ माने विष्णु लक्ष्मीपति एका से माने अभेद परमात्मनि सच्चिदानंद ब्रह्मरे से माने एका दैट ऑल दीस थिंग्स आई नो किंतु आई हैव समथिंग टू से हनुमान कहते तथापि मम सर्वस्व श्रीराम कमल लोचन किंतु मो पाई सबु किछि होचंती श्री रामचंद्र दिस इज कॉल्ड इष्ट निष्ठा दिस इज कॉल्ड भक्ति मोर संपूर्ण ज्ञान अछि दैट यस द अल्टीमेट रियलिटी सच्चिदानंद ब्रह्म मो नीति नीति मार्ग रे जाय कि मो निजर स्वरूप ब्रह्म चैतन्य को जानि परिबी ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू मी किंतु माय मोर मने मन रे आवेश हेछि श्री प्रभुंकर श्री कृष्णंकर सो मय्यावेश्य मनो ये मान जी एमतिया एमतिया तकर आवेश हेछि मन रे नित्य युक्ता उपासते जे नित्य युक्त है कि उपासना करंती मम माने मोर एई कथाटा अर्जुन पचारिथिले गोटे शब्द यूज करथिले सतत युक्ताते जो आपण कहउछन्ती जे माने भक्त होछन्ती सबु बेले आपण ऊपर मन रखछन से माने सबु बेले ईश्वर चिंता करिवा सबु बेले ईश्वर कथा भाबिवा इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल इट इज पॉसिबल पॉसिबल नाही काई नुह जदि स्मृति हेथबो द वे वी नॉर्मली अंडरस्टैंड इट इज सब बेले ईश्वर चिंता करिवा माने सब बेले ईश्वर को भगवान को मने पकेवा बट रिमेम्बरिंग द फैकल्टी ऑफ मेमोरी it does not work like that सब बेले गोटे जिंस धरी रही पारेनी थ्रू आउट आवर डे हमें जेते भी चेष्टा करिवा फॉर अ फ्यू आवर्स वी मे एट मोस्ट वी मे कंसंट्रेट ऑन वन थिंग बट देन सम अदर थॉट्स विल कम आ तापर जे सोई पड़िबो सोया बेले तो इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट गॉड निद्रा रे स्वप्न रे भाबिले भी निद्रा रे गभीर निद्रा सुषुप्ति रे गले मने पड़िबनी सो जेतले सब सबु बेले ईश्वर चिंता करिया कथा होची स्मृति नुह सेटा एरा कौन दुई प्रकार हेई पारे सर्वत्र ईश्वर दर्शन गोटे होची जे जेतबे मु बुझी परिबी जहा देखुची जहा सुनुची व्हाटएवर एक्सपीरियंस आई हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज परवेडेड बाय गॉड ए द्वादश अध्याय भक्ति योग अध्याय जोटा गीता रे तागरे तागुरु आस्थला 11th चैप्टर विश्वरूप दर्शन से सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड रे भगवान को देखछन्ते एकत्रित हेकी सो व्हेन आई रियलाइज दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज गॉड सबु प्राणी भितरे सबु मनुष्य भितरे सबु एमतिया भी हो जो जड़ पदार्थ सबु आड़े कृष्ण अछंती सेतेबेले जहा भी देखिबी कृष्ण कथा मने पड़ियो इट्स नॉट दैट आई हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग माय सेल्फ ऑफ भगवान व्हाटएवर एक्सपीरियंस आई हैव आई विल इमीडिएटली रिमेंबर गॉड because I have this knowledge that God is in everything, in every experience. केन उपनिषद रे कहा है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते प्रतिबोध रे in every experience if you realize that Brahman देखिया बेले सुनिया बेले खाइवा बेले at every experience if you realize Brahman you will attain amritatva you will attain moksha and immortality that's one way सब बेले ईश्वर चिंता करिया this is one way द्वितीय उपाय होची आत्मा रूप रे आई एम दैट रियलिटी मु आउ श्री कृष्ण अभिन्न आई एम ब्रह्मन जोटा ज्ञान मार्ग रे हुए आत्मा रूप रे निज को जानले से सच्चिदानंद को जानले आत्मा तो सब आई एम ऑलवेज देयर वेयरएवर आई एम आत्मा तो अच्छी मु निजे से सो आई कैन नेवर फॉरगेट माय सेल्फ सो इफ आई नो दैट माय रियल नेचर इज ब्रह्मन दैट विल ऑटोमेटिकली बी एट द बैक ऑफ माय माइंड एडी भक्ति रो गोटे there is a very unique approach of bhakti देखंतु बहुत लोक पचारंती आपण कहउचंती ईश्वर चिंता करिया को किंतु
काम मझिरे संसार रे बहुत काम अच्छी, ऑफिस रो काम अच्छी, बहुत there are many ups and downs in samsara. How will you remember God? You will forget God once in a while. The answer is, it's not, bhakti is not a matter of the mind. Bhakti is a matter of the heart. Bhakti is a matter of the heart. The one you love, that love doesn't come and go. You may think of that person, you may not think of that person, but the love remains. ଯେମିତିଆ ମା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳଠୁ ରାତି ଯାଏଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, because she loves the child. Now, in the middle of the work, she may not think of the child. She may be doing many things and she may be very busy. ସେତେବେଳେ ଯେ ସନ୍ତାନ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, actually not necessarily. But you cannot say that she does not love the child, because all the activities are being done for the child. Semitya, if my heart is given to the Lord, if my heart is given to Sri Krishna, to Lord Jagannath, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି, I will dedicate all my actions. Sri Krishna କହିବେ ପରେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ, ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣୀ ମୟି ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ, ଯାହା କରିବି, that is my puja of Lord Jagannath. Whether it is actually ritualistic puja in my home or temple, or my office work, my work in the home, jaha kama karchi mo, I can offer it to Lord Jagannath. And so, when the heart is given to the Lord, then more manore, actually, see, at that moment, whether I'm thinking of God or not, that is secondary. So, bhakti is a matter of the heart, not of the intellect. Nitya yukta. So, continuously connected to God through love. But Purva Paksha kan thila? You cannot be continuously connected to God. Ko jinsare continuously hei pareni. Our answer is, through bhakti it is possible. Just like a mother loves the child, say santana katha bhabu ki na bhabu at that moment, but love is always there. You cannot say tame chua katha bhabu na ataya tame taku bhalo pau na. Not necessarily. Se to bhalo pauchi. Similarly, our mind may be given to different things because of the demand of work, but heart is given to God. So bhakti works in that way. A yukta shabdata, এটা টিকে ভাবিয়া পড়িব, what is meant by yukta? ভগবত গীতারে এই যুক্ত শব্দ বারংবার আসছে. We will take up 2 or 3 instances. It's a very crucial word. Yukta মানে same root as yoga. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ connection. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ connection କେମିତିଆ ଭାବେ ହେଇପାରିବ, that is the whole objective. ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୁହା ହେଇଛି, ଯେମିତିଆ ଆମେ ଦେଖିବୁ 6th chapter, ମୁଁ ଏଠି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଛି, 8th verse ରେ ଅଛି, chapter 6 verse 8, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन. श्रीकृष्ण कहते युक्त हवा को पड़ो. युक्त हवा माने कौन? 6th chapter 6th अध्याय जो 8म श्लोक अच्छी कहते युक्त माने ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा. आम तृप्ति कौटू जाऊँ? कौन फिल्म रे चाहूँ ना सांग माने चाहूँ ना सोशल मीडिया रे चाहूँ? Where are we seeking for happiness? Family भितर चाहूँ? श्री कृष्ण कहते ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा. ज्ञान माने यही शास्त्र पढ़िवा, स्तोत्र पाठ करिवा, more also wider meaning would be जो कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, यही साधन रे engaged रहिवा ज्ञान. आउ जो अनुभव जोटा हबो, अपरोक्ष अनुभव हबो, that I have the feeling of the presence of God, presence of Ishvara. Or ज्ञान मार्ग रहले, that I realize I am not the body, not the mind, I am the witness consciousness. याकु कहते विज्ञान. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा. ये युक्त जे बाहर जगत रे, we do not go around with a begging bowl to the world. मते टिके तृप्ति दियंतु, मते टिके आनंद दियंतु, मते टिके सुख दियंतु. That's what we are doing. We want happiness, fulfillment from money. We want happiness, fulfillment from other people in the family, in the community, Facebook friends. So in this way, we are going around asking for happiness from the world. এই লোক যে যুক্ত, সিয়ে তার happiness জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা. টিকে আগুরু কহিলে introduction রে,
that I am from Bhubaneshwar. ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଛକ ଯୋଉଟା ବିଜେପି କଲେଜ ପାଖରେ, ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ। ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସେ ଛୋଟବେଳେ ଯାଉଥିଲି ସେ ମଠକୁ। ମତେ ଅବିକା ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ। I was comparing ଆମ ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ they have got family, ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସା ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଚାକରି ଅଛି, so many activities and entertainment are there, power ଅଛି, and yet they are not happy. ଆଉ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମଠରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ୟାଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ମଠରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଠ ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ନୁହଁ, it belongs to the trust, so they have nothing. In their room also I have seen hardly anything is there, few books are there, few clothes are there, that's all, and yet they are happy. How are they happy? Say, so what is the source of their happiness? এই হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা. So that put a very powerful impulse on my mind at that time. If I really want to be happy, maybe this is the path. So it's not that you have to become a sannyasi. You have to remember, neither Krishna was a sannyasi nor Arjuna was a sannyasi. And after Gita also, neither Krishna became sannyasi nor Arjuna became sannyasi. In fact, Arjuna wanted to become sannyasi and leave his duty. That's why Bhagavad Gita was taught, that you can be spiritual while remaining in samsara and practicing yoga. Samsara rahiki yukta rahiva, jnana vijnana triptatma. Ye gote mane hala. Auri gote kohushanti ଯୁକ୍ତ କେମିତି ହବା, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କେମିତି ହବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, one more reference I found is chapter 5 23rd verse, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, very important point he is saying, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମ ମାନେ ଆସକ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ, ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି, if I am able to withstand ତାର ଯୋଉ ବେଗ ଆସେ, I get very angry and then କିଛି ମାନେ harsh words I speak, or I send one harsh email, or something I do out of anger, ପରେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କାଇଁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ବିହେଭ କଲି, କାଇଁ ଏମିତିଆ କଥା କହିଲି। So this, if we can withstand at the moment of anger, when that impulse comes, if I can control it and not react, jo harsh words are coming to my tongue, I will not utter them. Not only that, at deeper level, when that anger comes, it will come and subside, I will remain calm. Not that I will become very angry but I am not expressing it, but inside I am very angry. That is also good. First of all, stop the external expression and then maintain internal calmness. If you are able to do this, kama krodha udbhavam vegam, whether it is anger, whether it is passion, at that moment, if I can control myself and also remain calm and peaceful internally, sa yuktaha, Krishna kochanti, se yogi se yukta hi parive ishwaranga sangare. Not only that, sa sukhi nara, se jivanre sukhi haba se, the one who can control these reactions from within. Yeah, this is another meaning of yuktaha. Auri gote tritiya, one more example I will give. Yukta shabdata mane kana? It gives us these are ones which are giving us some indication of a spiritual life. Kemitya hele mu spiritual hai parive. One more example, very famous example, 4th chapter, चतुर्थ अध्याय रे जो 18 नंबर वर्स जोटा, कर्मण्य कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त सकृत्स्न कर्मकृत। कहउछन्ति जे कर्म करूची किंतु ताकू लागियो किछि कर्म करूनी मु, आउ जणे कर्म न करी कि चुपचाप बसी अछि, सी भाबुची मु विराट त्यागी, मु सन्यासी अछि, मु किछि को संसार संगे युक्त नो, किंतु से जे ज्ञानी से जानि ये भी कर्म करूची, इज ऑलरेडी विदिन, इज स्टिल विदिन संसार। जे कर्म रे अकर्म जाको दुसुची, जे अकर्म भितर कर्म जाको जे देखुची, सी बुद्धिमान, सी युक्त होचंदी, he is sayuktah. This is very contradictory, very interesting verse.
କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏମିତିଆ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରି। ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ୱାନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ଦିସ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଣେଶ ଗଣପତି ବସିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବେ, କିଏ ଲେଖିପାରିବ ଡିକ୍ଟେସନ? ସୋ ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ପିଚ୍ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ଥିଲାନି, ଜଣେ you need one stenographer. So Ganesha became the stenographer. अबिका गणेश ଆସିଲେ ରାଜି ହେଲେ, but he had a condition कि ମୁଁ ଲେଖିବି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିବି, but ଆପଣ ଯଦି ରହିଯିବେ ଥରେ ବି, if you stop, then I will not put down the pen and I will not write anymore. So you have to continuously tell me श्लोक after श्लोक after श्लोक. व्यासदेव भाविले अरे very difficult, Sanskrit श्लोक्स I have to compose and tell, न रहिकी केनता कहबी. So he also put a condition. कहले कि ठीक अछि आपण लिखंतु, but the condition is आपण किछि न बुझी के लिखिबेनी, बुझी के लिखिबे. Then Ganesh was all right, he said I will write that, I will understand and then write. आरंभ हैला जेतळे व्यासदेव टिके he became a little breathless, कोन कहबी बुझी पार नांती. Then he would give a very difficult verse, माने एकदम complicated contradictory गोटे कथा कहबे. तो गणेश टिके रही जिवे, भाबिबे कोन कहले एटा, तापर लिखिबे. से जो भाबिया को किछि समय नेले सेतळे व्यासदेव he would compose some more verses. So सेई जो श्लोक गुडा एको कोनती ग्रंथि से जानि सुनि कि किछि कर रखि जाय छन भितरे भितरे. But anyway, that's a story. But the thing is, when such shlokas come, deep truth, a very profound truth is being told here. ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ସେଟା ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ, ମାନେ that kind of thing. ତାପରେ ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଲେ କର୍ମ ଭିତରେ ଅକର୍ମ ଦେଖିବା, ଅକର୍ମ ଭିତରେ କର୍ମ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ. ନର୍ମାଲି we think କର୍ମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଅକର୍ମକୁ ଅକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, that is correct. Here is saying opposite. ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି. But what it means is that our real nature, सच्चिदानंद, से निष्क्रिय, मु निष्क्रिय ब्रह्म. शरीर माध्यम रे कर्म होची, इंद्रिय माध्यम रे कर्म होची, मन चिंता करूची, that is all going on, but I am the witness consciousness. मु साक्षी चैतन्य. एई जो दृष्टांत, एई जो एई ज्ञान जोटा ताकू कहउछन्ती कर्म रे अकर्म देखिवा, अकर्म रे कर्म देखिवा. जे जानि नि ए तत्व से भाबुची मु सब छाडी देबी, मु संसार किछि काम करिबेनी, मु चाकरी करिबेनी, I will not do any work. जेमते अर्जुन कहउछले मु युद्ध, I will not fight this war, I will withdraw from it. But that withdrawing is also a kind of karma, because you are doing it with your mind. So any activity of the body, any activity of the senses, any activity of the mind is karma. However, my real nature, Satchidananda Chaitanya, that is beyond all karma. सेठी को कर्म नहीं, को कर्म फल भी नहीं. The one who knows this, से युक्तः, that person is युक्त. अतः हम देखुछु इस शब्द, युक्त शब्द has multiple meanings and it all gives us insight into spiritual practice. मु कोन करिवि, साधना केनता करिवि. सो गोटिए माने हला that जे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, मु साधना ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, एई थरु मोर तृप्ति, ईश्वरन को मोर तृप्ति. It's not difficult. If I start my sadhana slowly, I will feel that the joy I get in the puja, joy I get in the bhajan, the joy I get in reading about, reading Bhagavat, joy I get in reading the lives of great saints, that is my source of joy. So I get joy in spiritual life. I'm not looking for happiness in the world. Sangsara, I will keep on doing my duty, and that also as sadhana, as a worship of Lord Jagannath or Sri Krishna. So that is one practice. Jnana Vijnana Triptatma. Second practice, je kahle Kama Krodha Udbhavam Vegam. The waves of passion, anger, joda ase amar jivan re, the ability to control that as they arise, in keeping the mind peaceful. Auri gote kahle je let there be activity at the level of body, let there be activity at the level of senses, let there be activity at the level of the mind. I am the witness consciousness, Sakshi Chaitanya,
beyond body and mind. I am always beyond action. यह जाने कि you engage in action, there is no problem. कर्म भीतर रहो, you will not be touched by action. So these are the meanings of yukta. किंतु श्री कृष्ण आउरी कहउचंती एटी कि युक्ततम ए शब्द कहउचंती ते युक्ततम ए माने युक्त किए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा से युक्त जे काम क्रोध को कंट्रोल करि पारछि से युक्त से जे सब कर्म भितर माने साक्षी है कि अच्छी कर्म भितर अकर्म देखछि अकर्म भितर कर्म देखछि किए युक्त किंतु ये सब युक्त जो माने योगी यांको ए योगी मानक भितर बेस्ट के युक्ततम माने बेस्ट जे द पर्सन हु इज कंप्लीटली सेंटर्ड इन गॉड ए युक्ततम शब्द थरे कि दी थर पूरा यूज करचंती भागवत गीता रे आ सब बेले से एका जिंस कहउचंती आ गोटे जगह रे 6th चैप्टर एंड रे से कहउचंती 6th चैप्टर इज ऑन मेडिटेशन ध्यान योग से ध्यान सिखै कि कहउचंती ए जेते माने ध्यानी अछंती यांको भितरे सबटु युक्ततम किए 6th चैप्टर रे कहउचंती किए न जेदार भक्ति अछि जने ध्यानी हेई पारे विदाउट भक्ति ए बुद्धिस्ट केते सब विपासना मेडिटेशन करचंती माइंडफुलनेस करचंती जे पतंजलि योगी अछंती से माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करचंती दे मे और मे नॉट हैव भक्ति किंतु से जेते योगी अछंती जेते ध्यान करचंती तांको भितर जाहार भक्ति अछि श्री कृष्ण कहउचंती युक्ततम जे ध्यान करचंती दे आर युक्त नो डाउट बट बेस्ट अमंग देम जे तार भक्ति अछि एवं ए 12th चैप्टर बिगिनिंग रे सेकंड श्लोक रे से कहउचंती युक्ततम किए जार भक्ति अछि मय्यावेश्य माने ईश्वर जेमते भूत पाइचंती तक गॉड हैज पोजेस्ड यू मय्यावेश्य मो ऊपर जार 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 आवेश हेची एटी मो ऊपर जो कहउचंती मई ए हु एम आई ईश्वर को दृष्टि रे वी कैन थिंक ऑफ 4 लेवल्स गोटे लेवल होची द पर्सनल गॉड ईश्वर कृष्ण स्वयं अवतार अर्जुन के सामने जे ठिया हेचंती अवतार ही दैट इज वन मई माने भक्ति टू कृष्ण अनदर मीनिंग ऑफ मई माने मोर भक्ति मो माने किए कृष्ण सेकंड मीनिंग वुड बी विष्णु और नारायण कृष्ण जहांकर अवतार जो ईश्वर जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करूचंती तांको अवतार से ईश्वर होचंती माने इन मी भक्ति इन मी थर्ड मीनिंग ऑफ मई इन मी इज 11th चैप्टर ए चैप्टर जो भक्ति योग चलची या आगुरु 11th चैप्टर आस्तला विश्वरूप दर्शन ए विश्वरूप रे ईश्वर अछंती माने शुद्धु पीतांबरधारी मुरली मनोहर कृष्ण not only that not only नारायण विष्णु in वैकुंठ but the entire universe प्रति जीव भितरे प्रति प्राणी भितरे आकाश रे पृथ्वी रे पर्वत रे समुद्र रे गंगा रे सबु आड़े मो ईश्वर दर्शन करछि सो दिस कॉस्मिक फॉर्म ऑफ गॉड विश्वरूप दर्शन जोटा चैप्टर 11 रे कहा हेतला दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ मई इन मी सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड ईश्वर देखछंती इन फैक्ट वन कंटेम्पररी रेफरेंस इज सिनेमा गोटे हेछि ओपेनहाइमर अभी का यूएसए रे बहुत चालुछि से सिनेमाटा सेतर देखैछंती मेनी ऑफ अस डू नॉट नो बट ओपेनहाइमर वाज अ ग्रेट भक्त ऑफ भगवत गीता सबले गीता रखथिले निज पाखरे आ जेतले प्रथम एटम बम एक्सप्लोजन देखिले माने जेटा फर्स्ट टेस्ट हैला ट्रिनिटी न्यू मेक्सिको रे by seeing the explosion he quoted from the bhagavad gita so 11th chapter ru kalo asmi I am come time the destroyer of worlds se कहउछन से so विश्वरूप ईश्वर the 11th chapter जेमता कहै छी और 1/4 meaning of mai of course is comes from the jnana marga that brahman satchidananda mu he say I am that brahman that is another way final way of understanding ishwara so chatta there are 4 ways so chatta jak gita रे अछि गोटी होची स्वयं कृष्ण अवतार जे जे रूप रे हम तांको पूजा करछु लॉर्ड जगन्नाथ आल्सो पुरुषोत्तम जोटी हम कहउछु तांको द्वितीय होचंती से लक्ष्मी नारायण ईश्वर विष्णु तृतीय होचंती ए विश्व रूप रे विश्व ब्रह्मांड रूप रे ईश्वर सबु किछि भीतर ईश्वर आ चतुर्थ होचंती
Say Satchidananda, existence, consciousness, bliss, I am that, which we talk about in Vedanta, in Advaita Vedanta. तापरे कहउचंती भक्ति करिया पे कोन दरकार श्रद्धया परया श्रद्धा दरकार एडी गोटे कथा कहे मो भक्ति मार्ग डिपेंड्स ऑन श्रद्धा ज्ञान मार्ग डिपेंड्स ऑन एनक्वायरी विचार विचार करी गले ज्ञान मार्ग रे आ जदि श्रद्धा करी धरि रख परिबो ताहले भक्ति मार्ग श्री रामकृष्ण भी कहउचंती ईश्वर लाभ पई कोन दरकार श्रद्धा दरकार it is often translated as faith in English. In fact, 80 America re, the word used for religion is faith. They will ask you which faith do you belong to, Christian faith, na Muslim faith, na Hindu faith. Faith mane shraddha, vishwas. In Sanatana Dharma, you have a whole range of approaches. 80 mostly because of the Christian influence, they know only the Christianity gotte type of bhakti marga. So they know only the bhakti approach. So faith, shraddha. Shraddha is very important. कठोपनिषद रे कठोपनिषद आम जानछु से छोटिया छुआटी नचिकेता से जमालय जमराज पाखे जाउछंती आ पचारछंती प्रश्न से मृत्यु परे कौन हुए की अछंती व्हाट इज द रियल नेचर मु कौन शरीर ना मन ना आत्मा एसो प्रश्न किंतु आरंभ होची से जमराज पाखे जिबा आगरु उपनिषद कहूँ श्रद्धा आविवेश ता भितर श्रद्धा पशिला आसिकी श्रद्धा तार आवेश है श्रद्धा आवेश माने सेठी शंकराचार्य तार व्याख्या करचंती आस्तिक्य बुद्धि माने अच्छी देयर इज सम रियलिटी ए जिंस नथिले कि नोबडी कैन बी स्पिरिचुअल इफ यू थिंक ए जगत रे जा देखुची सेति की मात्र अछि ताको कोनती चारवाक मटेरियलिस्ट बट इफ यू हैव द फीलिंग that belief, that faith, that या पार भी किछि अछि एते शास्त्र सबु धर्मर शास्त्र कहउची सबु महापुरुष कहउचंती that God exists. So that feeling of faith that there is some power behind everything, a supreme power, this is called श्रद्धा. श्रद्धा माने मु एजा जानिनी जार ज्ञान हे जायछि जार प्रत्यक्ष अनुभूति हे जायछि ताको श्रद्धा कहबानी ताको कहबे ताकोन श्रद्धा जे ज्ञानी जे परमहंस जे ब्रह्मज्ञानी जार ईश्वर दर्शन जे ठीक ठीक प्रकृत भक्त ताहा क्षेत्र रे सेटा श्रद्धा टू बेसी सेटा सेतळे हे जाय निष्ठा जोटा श्रद्धा रे आरंभ हुए आमे विश्वास करछु किंतु बट वी हैव नॉट येट रियलाइज्ड हमर प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभूति हे नहीं जाय जांकर हे जायछि सेही विश्वास तो तांकर रहि जाय तांकर कोन विश्वास चली जाय नॉट एट ऑल दैट रिमेन्स बट इन देयर केस इट बिकम्स निष्ठा से जानी जायछंती से जानी कि सेठी अछंती दे हैव सेंटर्ड देमसेल्व्स देयर they have become Ishwara Maya tankar जीवन ही जायछि but until that point the only thing that will save us is this Shraddha. सेतु श्री कृष्ण कहउछंती ए भक्ति कोठु आरंभ हुए श्रद्धामय से कहउछंती श्रद्धा श्रद्धया परया अपेता परा श्रद्धा हाईएस्ट श्रद्धा तांकर उपादान तांकर देयर आवर रियल वेल्थ इज दिस श्रद्धा सेतु श्रद्धा नष्ट करिया उचित नो we are all here aji satsang me achu because we have some shraddha somewhere we have a deep faith in God that's why we have turned up here and that is the most valuable thing in our lives ede amar jiban ro pathya this will take us forward nothing else amar ashraya kon paisa ashraya ki ashraya mane jetole samasya hoye ki jetole me dar lage jetole I feel anxious what do I catch hold of some people catch hold of मोर बहुत पैसा अछि that is मतलब माने माने तारो सेटा आश्रय some people catch hold of family ना मोर स्वजन अछंती पु अछि झी अछि से देखिबे मते some people catch hold of powerful person politician boss मते भलो पांती कि I know this politician so I will catch hold of that person in trouble now none of these are reliable ultimately none will be our ashraya. Our ashraya is Prabhu himself, Ishvara himself, the most trustworthy, who will never fail us ever. आमे just तांको आश्रय नौनु बोली आमर सेते समस्या. So wherever we have trouble, wherever we have anxiety, always catch hold of the Lord, catch hold of Sri Bhagavan. So this requires Shraddha. More ashraya hochunti, more param ashraya hochunti Sri Prabhu, Sri Jagannath, Sri Krishna. That is my so this is built on Shraddha.
आमे तांको देखिनु ए जाय श्री कृष्ण को आमे देखिनु जगन्नाथ महाप्रभु को हमर प्रत्यक्ष अनुभूति हेनी किंतु आमे जाउछु on what basis? On the basis of श्रद्धा. So our श्रद्धा is very important. श्रद्धा has to be nurtured. श्री रामकृष्ण कहउथले जेमति रास्ता पाखरे if you have planted a sapling, a tree, you are going to plant, you have to surround it with a fence. Nahale say guy asi khai jibo, goat will come and eat it up, or somebody will trample on it. You have to surround the tender sapling with a fence. Jetole shraddha रूप अछि आम भितरे, we have to surround it with a fence. Regular practice, amar satsang, bhalo loko, sadhu sanga tanko sangare rahiba, and to carefully avoid materialistic people. So various ways to fence that shraddha and to nurture it. Nija jiban re and in family life also. Also in the family, you turn the house into Jagannath Mandir. There is Jagannath Mandir in Chicago. You turn your also devotees. Every Jagannath devotee's house should be like a mini Jagannath Mandir. And great blessing is there. Ajiro prashna hochi kon prayojan bhakti yoga amar jibone. What is the importance? Importance is this twofold. गोटे प्रवृत्ति मार्ग रे गोटे निवृत्ति मार्ग रे. प्रवृत्ति मार्ग रे माने आमर निज पर्सनल लाइफ इन दिस वर्ल्ड, हेल्थ, कैरियर, then relationships, family life, community life, all those will become better if they are organized around Sri Jagannath. There is a blessing which flows. तांको blessing सर्वत्र अछि, but we have to be yukta. Electricity सर्वत्र अछि, but we have to get connect to it. Plug point रे connect करैक पड़ियो. So the connection is through this shraddha. So this has to be protected. Shraddha has to be protected. Se tahapare कहउछंती कृष्ण युक्त तमामताः. This is my humble opinion. श्री कृष्ण निजे कहउछंती जे सबु साधना जमाने करछंती ज्ञान भक्ति कर्म सब भितरे भक्ति उत्तम, that is the best, easiest. या पर कहबे थर्ड श्लोका, फोर्थ श्लोका, फिफ्थ श्लोका, that जमाने ज्ञान मार्ग रे जाउछंती, they will also attain, but the path is more difficult, more dry, and it's like a steep path. The same result you can obtain much more happily, much more sweetly with the help of Bhagavan through bhakti. जने उत्तराखंड साधु कहउछंती ईश्वर को पकड़िए महात्मा जी, बहुत बड़ा सहारा है. Catch hold of God. We are weak, all of us. If you think we are not weak, then you are not realistic. Our capacity is very limited. किंतु गोटे अनंत कैपेसिटी आम पछरे अछि. आमे ईश्वरंक बलरे बलवान हवा. That we feel empowered by the presence of the power of God in our lives. निश्चिंत ही परिवा. निश्चिंतिते ही नारदीय भक्ति सूत्र अछि. निश्चिंतिते ही भगवान एव भजनीय. सबु चिंता छाड़ी की ईश्वर एकमात्र होचंती भजनीय in our life. One power to be served, one power to be loved is God in our lives. Community jette achanti, family re achanti, bapa ma achanti, your own husband, wife, children, all of them can be served as service of the Lord, of service of Sri Krishna, Sri Jagannath. So these are the dimensions of bhakti. Aji itti parjanto, I think one can go on whole Bhakti Yoga. That chapter is a very beautiful chapter. 12th chapter of Bhagavad Gita. It's one of the most beloved chapters. Chotyavi, only 20 shlokas. And many people, they start Bhagavad Gita through 12th chapter. Many people memorize at least 12th chapter. Eti koi ki musaruchi. I'll do a peace chant, and then I think our compere will take the meeting forward. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Thank you so much. Hari Om. Thank you, Swamiji. It's what I will say is like a so spellbound speech, and what you said about Yukta. Actually, you connected us to you for last 1 hour, totally connected. So you can't think of something other than only listening to you and trying to understand what you are saying. This is so deep and so important for our life. We're really blessed to hear today. Very, very thank you. I will
we have probably 2-3 minutes or 5 minutes for a couple of questions. If anyone has got any specific question, please ask. मोर आज्ञा अछि नमस्कार आपण तो न्यूयॉर्क रहती मूवी पाखे आप पाखापाखि रोचे न्यू जर्सी रे सो वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू स्वामी जी सो मोर क्वेश्चन है हमर पास्ट बर्न रे आमे जहा कर्म करू तो तार फलटा आमे एई माने जन्म रे आमे ताको फलटा पाऊ मोस्ट लाइकली बट एटा गोटे अनफेयर नुहे कि भगवान को ये रे कि आई डोंट हैव एनी कंट्रोल इन माय पास्ट बर्न राइट माने मु जानि नि मु कोन थिली मु कोन कर्म करछि आई डोंट हैव एनी कंट्रोल राइट बट तार फलटा मते एई जन्म रे मिलुछि where I have the control. I have, God has given me this life to do the good karma, correct? So that I can give the good result maybe in this janma or next janma, right? But the past janma re I don't have any much control, right? So is it really fair, or can you please provide some lights on this? Yes, yaku karmavad kohanti, the law of karma. What is the law of karma? Ki पापर फल दुख हम पुण्यर फल सुख हम एमती भावे कह जाय पारे धर्म करिले पुण्य हुए पुण्य रहले तार रिजल्ट विल बी सुख सो इन दिस लाइफ समथिंग गुड विल हैपन टू अस बिकॉज वी हैव डन धर्म इन दिस लाइफ और पास्ट लाइफ अधर्म करले पाप हुए और पाप थिले तार फल हम दुख ए जीवन रे दुख आसीबो so Swami Vivekananda put it very nicely. He said good bad bad and none escape the law. So bhalo thile phalo tar bhalo habo mando thile mando. Now you might say that last life रे कौन थी मुझे किसी जानी नहीं कौन करची केंता करची I have no memory ता फलो अभी का क्या मिलियो होते we have control or not over the last life, that's not the issue because we have already done it. जेमतिया कि खेलुची क्रिकेट तो गत दिन जा खेली that is gone. But you have to start today's play with that score only. Suddenly you see scoreboard re likha aichi ette run ette wicket jaichi. How do I know that? That was yesterday. But I have to start. There's no other way. I cannot start with a fresh score today. Zero ru kebe arama hi parani. So we have to deal with the life here. The thing is, 2 points I will mention here. One is, I may say that, but mu past life to kichi jani nahi kaun hai chi. Well, one way is there of knowing what was it like in the past life. If I look at my life now, this mixture of joy and suffering, this mixture of success and failure in this life now, dekhile I have got some ଟିକେ अंदाज ହେଇ ଯିବ ମୋ past life ରେ କେମିତି ଥିଲା. So by the result now, by what I am seeing now, so it was some mixture of good and bad in the past life. This much I can understand. Second thing, memory जो आपण कहउछनी कंट्रोल कथा कंट्रोल तो एतिकी जे मु से कर्म करथिली जहां भी कर्म हेची आई डोंट नो बट मेन थिंग इज व्हाट यू आर सेइंग इज आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग मतलब किछि मने नाही त सिगडा बट मेमोरी डज नॉट हेल्प अस रियली व्हाई आई एम टेलिंग यू इन दिस लाइफ ए जीवन रे भी मु भूल काम करी की खराब काम करी की व्हिच आई रिकॉग्नाइज मो करिवा उचित हेई नथिला मोर सेमता कथा कहवा उचित हेई नथिला सेमता चिंता करिया उचित हेई नथिला बट आई डिड इट आई हैव क्लियर मेमोरी बट अगेन आई रिपीट दैट इज द थिंग जदी हमें मेमोरी रे संगे संगे सिखि जानतो गोटे थरे भूल करी नेक्स्ट टाइम आई विल नेवर डू इट दैट्स हाउ इट शुड बी आई शुड लर्न बट वी डोंट लर्न वी डू लर्न बट वेरी स्लोली बारंबार भूल करी की विदाउट व्हाइल रिमेंबरिंग इट आल्सो स्लोली ओवर टाइम वी लर्न सो वी डोंट लर्न फ्रॉम मेमोरी आमर पूर्व जन्म मेमोरी थिले भी दैट वी विल बी वेरी डिफरेंट इन दिस लाइफ दैट आई डोंट थिंक सो हाउ डू वी लर्न देन we learn through suffering and development baranbar after getting knocks kicks and blows in life we realize semtia vyavhar semtia indisciplined life semtia dishonest life mujhe thibi I will suffer I am the first one to suffer jo mane addicted he janti drinking even after some time they want to give up they cannot give up because they have become addicted but they are suffering jo mane addict even they are suffering so they want to give they want to change now. So we change because of suffering, not because of memory. How? This is one level, at the level of karma.
But spirituality is beyond the level of karma. ये जो भक्ति एटी कृष्ण किंतु कहूनांती तमे भल कर्म करो तमे भल फल मिलिबो, खराब कर्म करो खराब फल मिलिबो. No, Krishna is saying you have to rise above that. भलर फल भल, मंदर मंद. This is basic. Spirituality means to go beyond that. ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, and whatever work I do is no longer that shopkeeping. I will do good, I will get good result. ଧର୍ମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ଅଧର୍ମ କଲେ ପାପ ମିଳିବ. I am going over that. I am now going to something higher. My bhakti to Sri Krishna, all my activities are puja of Sri Krishna or puja of Jagannath. And when you do puja, what do you get? You get prasad. So all the activities that I am doing in my whole day is puja of Lord Jagannath, maybe in the temple, maybe outside the temple. Therefore, all the karma phala which I will get in my life, whatever will come to my life in future, is prasad, Lord Jagannath's prasad. Now, prasad may be prasad jo phala mile. Some of it I may like, some of it I may not like. But once it is prasad, I don't have choice anymore. मत लागिबनी मते कदलीटा भल लागेनी, आंबटा भल लागे. I want the amba prasad only, not the kadali prasad. No, the important thing is the prasad is important, not the particular fruit. Similarly, bhala manda vivek asile I don't care anymore, because it is all prasad from Lord Jagannath. So this is how law of bhakti, law of karma works, and how bhakti takes us beyond the law of karma. जेतरे मोर कैलकुलेशन रहबनी, मो जीवन रे जा होची ठीक अछि, because I have dedicated my life to the Lord. जा आसीबो मो देखि नेबी. I will take it as prasad of Lord Jagannath. ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ? ହଁ ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉଟା କରିଛି ସେଇଟା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଅଖିଳ, ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଜିନିଷର କାହିଁକି ରେସିଡ୍ୟୁଆଲ ଟା ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। I've heard it. ମୁଁ ଶୁଣି ପାରଛି. ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି? Answer is this. ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ କଣ ମୋର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ ଯେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କଲି ବା ପୁଣ୍ୟ କଲି, ପୁଣ୍ୟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ we are fine, but don't ପାପଟାକୁ ମତେ ଦିଅନି ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ, ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛେ। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୁଏନି କି ମରେନି, ଖାଲି ଶରୀରଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। So until we merge with him, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ସୋ ଭଲ କଲେ ବି ଭଲ ମିଳିବ, ଖରାପ କଲେ ବି ଖରାପ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ହଉ କି ଆର ଜନ୍ମରେ ହଉ, ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ରେସିଡ୍ୟୁଟା କୋଉ ଟାଇମରେ ମିଳିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। Correct. This is the right answer, because ଆଗ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଥିଲିନି. I was the same one. Only the body is different. ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବଞ୍ଚିଛି, ବଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ହଉ କି ଅଦୃଶ୍ୟ ହଉ, ତ ସେଇ ଏକା ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛି ନା। Exactly. So ଆମର ମେମୋରି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଅଲଗା। ଏଇଟା ଏଇ ଜନ୍ମ memory is a very weak thing. ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବି କେତେ ମନେ ଅଛି ମୋର ଛୁଆ ପିଲା, when I was a baby, ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଆଗ ଜନ୍ମ କଥା ତ ଦୂର କଥା। So memory is very weak. You are right. ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ପାପ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାପର ଫଳ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନରେ ଆସିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଉପରେ, ମୋର ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ସାଧନାରେ ସହଜ ହେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ଜେଜେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ଥରେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ବୁଝେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରୁହନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛୁ ସଦାବେଳେ? ନା ମତେ ସଦାବେଳେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ନା କଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କଣ କରିକି ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଗୋପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡିବ। ତମ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଏମିତି କଣ କଥା ଗୁଡା ତାଙ୍କର ଭାବୁଛ? ନା ହଁ ସେମାନେ କଣ କେଜାଣି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ସେମାନେ ବୋଧେ ମତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ
ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ କଣ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଶରୀର ଉପରେ କଣ ତମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କର ନା ଗୋଟେ କାମ କଲ ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲ। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଉଦ୍ଧବ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ସିଏ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ ଗୋପପୁରକୁ, କହିଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ କରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ସେଠୁ ଉଦ୍ଧବ ସେ ଚିଠି ନେଇକି ଗଲେ ଗୋପପୁର। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କାହାଣୀଟି ଜେଜେଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ଯାହା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଠେଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଚିଠି ଦେଇକି। ସେ ଚିଠି ପଢିବେ କଣ, ଚିଠି କି ନେଇ ଭିଡା ଓଟରା କରିକି ଚିରି ସାଇଲେଣି। କିଏ ଗୋଟେ ସବୁ ଜେଜା ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ସେ ଚିରା ପାଠ ତ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚିଠିକି ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚିରିକିରି। ଉଦ୍ଧବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ, କଣ ଚିଠି ପଢିଥିଲା ମୁଁ ପଢିନି ତମକୁ, ତମେ କଣ ତାକୁ ଚିରା ଟଣା କରିକି ତାକୁ ଚିରି ସାରିଲଣି। ନା କଣ ସେ ଲେଖିଥିବ, ସେ ଲେଖିଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ ଲେଖିଥିବ ସେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା। ଟାଇମ କମ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧା 30 ସେକେଣ୍ଡ। ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ଗୋପୀଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା। यार गोटे मीमांसा वेरी इंटरेस्टिंग मते मने पड़ला। जने बहुत बड़ ज्ञानी सन्यासी थिले, से भी ओडिशा रे थिले। तांको से रहउथिले वृंदावन रे, तांको कहा जाउथला ओडिया बाबा। हाँ, सीए तांको जने की पचारथिले कोटा श्रेष्ठ, भक्ति योग ना ज्ञान योग। से जानचंती ये तो ज्ञानी, अद्वैतवादी, तो निश्चय ज्ञान योग कहिबे। ज्ञान कौन बड़ी है, भक्ति या ज्ञान? दिस वाज द क्वेश्चन। से आंसर संगे संगे आंसर दिले, भक्ति बड़ी है। विच इज ग्रेटर, भक्ति और ज्ञान? भक्ति इज ग्रेटर, भक्ति बड़ी है। तो से के चमकी गले, अरे ये तो ज्ञानी है कि कथा कहते, अच्छा भक्ति बड़ी है तो ज्ञान क्या है? से सुंदरता जवाब देले। से कहले भक्ति बड़ी है और ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ज्ञान में समत्व बुद्धि दुईटार मान रखले से, दुईटार यूनिकनेस देखैले से। हाँ ठीक कहले आज्ञा। हाँ ठीक अच्छे, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you. I think we are out of time. Very good questions, very good answers, Swamiji. Again, thank you very much. We already just answered. So with this, we will move to our next just a vote of thanks. So today, I will go ahead with the vote of thanks. First and foremost, thank you, Swamiji, for giving your time today and give us a real knowledge of understanding what is bhakti and what is the importance. ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଟପିକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା. You start with the dharma, artha, karma. Artha and karma is important, but on dharma is also equally important. Sanatana dharma is path to moksha, and Vedanta is will lead to the moksha, the ananda prapti. Jnana marga, bhakti marga is dita dwara amako moksha mili paribo. किंतु ए दीटा भितरे भक्ति मार्ग होची श्रेष्ठ टू गेट द मोक्ष. जदियो ज्ञान भी इक्वली इम्पोर्टेंट. एंड भक्ति मार्ग केमिति धरियो ना सर्वत्र ईश्वर दर्शन. That is the key thing. Like in mind, we have to do our karma, but at the same time, we have to think about God. So when you see the God everywhere, then you know you are already in the bhakti marga. And we can talk next time sometimes about the Om Brahmasmi, the real meaning. Today, there's no time. And bhakti is a matter of heart. By heart, when the mother example there, that was so touching. Like even if mother is working, not thinking about the child, but he's working for the child. So that itself is a kind of love towards the child. This is a very good example. Similarly for God, you do your work karma, but when your mind or heart is towards God, then that is that itself says you are in the bhakti marga. So it's so important in such a why it is important. And yukta part is very important. You stay connected with the God. So that's another important thing
how to follow the Bhakti Marga. So these few points actually touched me, that how we can be in the Bhakti Marga. As you said, you can go to temple or stay home or whatever. When your mind is towards Bhakti and God, then you are already in the Bhakti Marga. And Shraddha is the key thing. The electric plug. Electric is everywhere, but you have to connect. That's a very powerful speech. It's a very simple but very powerful. So you have to connect to the God. That's where the key part of the Bhakti Yoga. So I took those notes. That's very, very important. And also thank you, Nihar, for singing two beautiful bhajans. Those are really, really nice. So Surya Sabat, who set up all the video, and thank you to Surya, and thank you Bhubaneshwar for connecting to Swamiji. Swamiji, we need your help and to basically talk a few more times in future. We will reach out to you. It's so important that we hear to you and learn something from you. And then most important is our audience. Thank you very much for spending time to listen to Swamiji today and joining this satsang. We again, I mentioned, like every month, third Saturday at this time, we do this satsang. And next satsang will be our January, whatever time is, that's probably 20th, January 20th. We will come up with a new topic, and we will discuss on that. With this, I will conclude the program today with the Santi Mantra. I think Swamiji already said, with Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityor ma amritangamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. With this, we will conclude that. Thank you. Hari Om. Hari Om. Hari Om.